শিলহাকৰ উচ্ছেদিতৰ কাষত মেধা পাটকাৰ উচ্ছেদিতৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকী कौन थे उन सबको जेल में भी इतना बड़ा है। हमने जब भी उस कानून के तहत एक्शन ली है तब इमीडिएटली दौड़ के आके काम करना है। শিলহাকৰ জনতাক চৰকাৰে অন্যায় কৰাৰ অভিযোগ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ শিলহাকৰ উচ্ছেদিতসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ল পৰিৱেশ কৰ্মী মেধা পাটকাৰ চৰকাৰে শিলহাকত চলোৱা উচ্ছেদক লৈ সৰব নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰীগৰাকী শিলহাকত পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য মেধা পাটকাৰৰ শিলহাকৰ উচ্ছেদক লৈ লজ্জিত বুলি ক'লে পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকীয়ে सिलसाकू का ये क्षेत्र देखकर बहुत ही दर्द होता है और हर महिला के हृदय में जो दर्द है वो सुनकर हम सब शर्मिंदा है कि अपने देश में आसाम भी हमारे देश का हिस्सा है। ये सब भारतीय है, ये नागरिक है। नागरिक का मतलब केवल मतदाता नहीं होता है। संविधान के तहत जीने का अधिकार जिसको मिलना चाहिए वो नागरिक है और ये सभी में दलित है, आदिवासी हम कहते हैं, यहाँ जनजाति के कहते हैं वो है और अन्य जात धर्म के हैं। पर इनका पीढ़ियों से आसाम में जब निवास रहा है तो ये आसामी है। উচ্ছেদিত লোকসকলক কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চৰকাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে মেধা পাটকাৰে এতিয়া জিঞ্জাৰ হোটেল একে স্থানতে থকাক লৈ ক্ষোভ উজাৰিলে পৰিৱেশ কৰ্মীগৰাকীয়ে कईयों ने जमीन बाद में छोटी सी खरीदी क्योंकि यहाँ थोड़ी सस्ती जमीन थी, तो क्या उनका वो हक नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है? ये सवाल है। तो हमारा तो ऐलान है इस आसाम के मुख्यमंत्री महोदय और पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे सरकार को कि आपने जो आश्वासन दिए हैं, हमने नहीं दिए हैं, आपने जो आश्वासन दिए हैं उसकी पूर्ति करो, नहीं तो आप झूठ साबित होंगे और कोई जाति धर्म के आधार पर मत देखो। উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত অসমত এটা ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে শিলহাকত এই দাবী উত্থাপন কৰিলে মেধা পাটকাৰে নেত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে কৃষক সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি বিদ্যুৎ শইকীয়াই घर बनाओ आंदोलन किया तो आज 1/1/2011 की कट ऑफ डेट है। उसके पहले जो घर बना है वो अगर तोड़ा जाता है तो हम मानव अधिकार आयोग में जा सकते हैं, हम हाईकोर्ट में जा सकते हैं और हमारा संघर्ष चलता है तो सरकार रुकती है। तो यहाँ असम में भी एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए और यहाँ अधिकतर कट ऑफ डेट सिटीजनशिप का मुद्दा जब उठा था तब 1971 का बना था, तो ये सब 1971 के पहले के भी कई उनके कागजात हैं। ইপিনে মেধা পাটকাৰৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মেধা পাটকাৰে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ ক'লে দুটা ঘৰ বেছিকৈ ভাঙিম মেধা পাটকাৰে বুজি নাপায় আমাৰ ছোৱালীক কোনে লৈ যায় মেধা পাটকাৰে বুজি নাপায় আমাৰ সত্ৰৰ মাটি কোনে দখল কৰে এনেদৰে উভতি ধৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেধা পাটেকাৰে যদি কয় উচ্ছেদ হ'ব নালাগে মই দুটা ঘৰ বেছি ভাঙি দিম কাৰণ এইবিলাক মানুহে অসমৰ যি অৱস্থা মেধা পাটেকাৰেতো বুজিব নোৱাৰে আমাৰ মাটি আমাৰ জাতি কোনে লৈ গৈছে মেধা পাটেকাৰেতো বুজিব নোৱাৰে আমি কি মানসিক হেঁচাত আছো আমিহে জানো আমাৰ ছোৱালী কোনে লৈ যায় আমাৰ সত্ৰৰ মাটি কোনে দখল কৰে এইটোতো মেধা পাটেকাৰে বুজি নাপায় গতিকে মেধা পাটেকাৰ আজি আহিলেতো কালি মই আৰু দুটা ঘৰ বেছিকৈ ভাঙি দিম নুনমাটিৰ পৰা অজয় কুমাৰ বৰ্মন আৰু শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ